say RS. Okay. Another component with the same reference, this as a source, it becomes easy for identification. And this is, I will call this as a RD. Go to the label tab and give the label as a RS. Okay. Another component with the same reference, okay, it should be RD, I'm so sorry. This should be RD. So this is what the completed circuit. Now yet this is not completed. What I do to, I will take this on to left side so that, okay, I will change the parameters of the source. Source voltage, I will take RMS voltage equal to, if I want the 50 millivolts as a peak voltage, its RMS voltage 50 divided by root 2, it comes out to be about 35 millivolts. So I will call this as a 35 millivolts RMS voltage. What about frequency? Frequency, let us keep this equal to 10 kilohertz. Label, I can give the label as a V in. Let us call this as a V in. Okay. So as soon as I make it, okay, see the changes are made. 35 millivolt RMS, which is around 50 millivolts peak, 10 kilohertz with zero phase difference. This is what the V in voltage is. So it's indicating the RMS voltage. Label, already we have given the label. Okay, this is the V in. So this indicates it's a V in voltage, and these are the specifications of input voltage V in. Fine. Now I will give the name to the segments also so that it becomes easy while we plot the graph. So I will call this as a V in, and let us call this as a V out terminal. Show this net name V out. So this is V out. So I will bring it to upside. Okay, fine. Now in the earlier videos, we used to have this particular multimeter. This as a multimeter. Instead of that, today I will prefer another. But in order to measure the output voltage, I need to connect one resistor which acts as a load resistor. So I will choose one more resistor. We can copy even from the circuit only. But I will choose new one. Make it escaped. By default, it will ask for the next component to be connected. Let us take it of 1K value. Okay, no problem. I will rotate this and connect it between this positive of the capacitor and to the ground connections, and I will call this as a RL. So it becomes the load resistance RL. Okay, this is load resistance RL. Now, okay, this is the circuit complete. I will bring it to the center. Fine. Now to measure the input and output voltages, instead of using this multimeter which we used to use earlier, now what I will do, I will go to the place components. Actually shortcut is also there, you can come to this value, but in the groups I will choose here the indicators. So indicators here indicates voltmeter, horizontal voltmeter or the vertical voltmeter. So I will call this as a, I will use this voltmeter and make it okay. So what is the advantage of this? I will tell you. Two such voltmeters are required, one to measure the input and another to measure the output parameter, the output voltage, I will say. So fine. So if I drag the onto this side, there will be the sufficient space created. So it will measure the input voltage, and another will measure the, okay, let it be, and this will be connected to measure the output voltage from this point to this point. So I think I should bring it to some slightly left side so that it will fit, and drag it onto this side. So that straight connection circuit becomes more suitable to observe. Fine. So this is the circuit connections, input and output. So if I run the circuit, I may not get the reading right now. See what it is written here. Okay. It's giving the details. I will bring it onto this side. Okay. These are the details of this indicator which is acting as a voltmeter right now. It is used for DC, but as it is amplifier, it will consist of AC as well as DC. Especially AC parameter we are interested in. So I will change the properties of this and I will make this as a mode DC to AC.
I will make this mode from DC to AC for both the voltmeters, sorry, AC. I will make it okay. Now if we simulate it, we should get the readings. So for input of 0.035 volts, it means 35 millivolts, I am getting output as a 545 millivolts of output. So the details I will bring it onto this side. Okay, so this is a U2. Even we can change the label of this also. I will change the label. I will call this as a voltage. Which voltage it is measuring? Okay, simulation is running on. I will stop the simulation and I can change the label of this voltmeter. So I will call this as a V out. So it will give the readings of V out. Similarly here also the measurements U1. Instead of U1, I will call this as a input voltage V in by giving the proper label V in. Already V in label exists, so I will just call it as a VI. Fine, these are RMS voltages. So if I run the circuit, yes, this is the input voltage 35 millivolts, output I am getting 545 volt, 545 millivolts of output. So this is how it works. Now along with this also we can add the CRO. So if we want to add the CRO, we can add the CRO with its details. Oscilloscope, I will bring the oscilloscope. So positive if 8 is connected to the input side with respect to the ground connections. Similarly here it will measure the output voltage with respect to the ground connections. I can change the color of this so it becomes easy for identification. Segment color, if I make the segment color green, okay. And now if we simulate, it will simulate and we'll be getting the waveforms. So if we change the scale, it will help us to take the readings. Bring it to the required value B channel. Okay. I will change the time scale. So this is a perfect waveform. I will change its color. Okay, that's it. So these are the CRO readings. So in this way we can use the marker and have the reading details as well. So this is what the simulation of amplifier with the required details. CRO is connected with two different colors, one channel indicating input, another is indicating the output. So and this is with the 180-degree phase shift. So we can observe the details. So if I increase the scale, so it is indicating perfectly 180-degree phase shift between the input and output. In this way we can simulate the circuit. So if I close this, so it indicates this is the circuit, and if you double click and adjust the settings of CRO, it will give the perfect details. Fine. Hello friends. How to obtain the frequency response curve for the single stage amplifier. Now the circuit is already designed using this multisim software by National Instruments. The circuit was designed, only I have added these labels. You can just double click on the segment. So if you double click on the segment, it will ask the color if we want change in the color of the segment along with the preferred net name that we can change. I have changed the color so that once the simulation is turned on, I will be able to differentiate and identify the difference between input and output waveforms. That's why I changed the color as well as given the labels to these waveforms as an input waveform which is taken from the AC signal source, AC power source we can say, and this here we are observing the output. So the negative of both the channels of oscilloscope, I made the color of that as a black, and positive are given the color codes as a green and red respectively for input and output waveforms. So if we simulate the circuit, so we'll be getting the details on this meter. This is AC voltmeter that gives us the RMS voltage for 35 millivolts. We are getting the output as a 546. So I have used these meters for displaying the value.
So these meters I have chosen from the place indicators option. So if we go to any of the component list, now its simulation is running, so we are not able to see that. But if you place any component, from the group of the component families, there is one option that is a indicators, place indicators. So place indicators we can observe from the family only. So along with the transistor family, there are indicators. From the indicators, you can choose, these are the different indicators. So here from this I have chosen the vertical voltmeter. What is the benefit of this? Instead of using the multimeter as a voltmeter, from the instrument toolbar, I need not double click and check its value every time. So as soon as you do the simulation, so we can observe its details. We can see the readings easy. That was the concern. So I replaced that multimeters by these indicators. Now if I double click on the oscilloscope, we get these waveforms. So I enlarged the window of oscilloscope, so the waveform details can be observed easily. So this is the oscilloscope. So already we have seen in the oscilloscope, green color indicates input waveforms, which is connected to channel A, where we are measuring its amplitude with the scale of 50 millivolts for every block. This indicates 50 millivolts per division. So for the amplitude, this complete one block. So this whole division indicates the 50 millivolts. So input is around 50 millivolts peak voltage. That is what we have chosen from the AC power source. 30 millivolt VRMS equal to 35 into root 2 equals to peak voltage of almost 50 millivolts. So one block is covered vertically. So 50 millivolts plus 50 millivolts, total 100 millivolts peak to peak is the voltage that we are providing as input, and output which we are observing at the channel B with the red color is, its scale is 1 volt per division. So if I increase its value or decrease its value, see it indicates here. So how much is its value? So from using these two cursors we can check the details of time period, and from that we can calculate the frequency value too. So if I drag the on to left side, so I am able to get the details. So from the channel B, 500 millivolts is the value for one division. So this one vertical block, this square blocks indicates one division. So one division carries the 500 millivolts as its amplitude. So from this also we can take the measurements of input and output voltages using the oscilloscope reading. So already in the previous video we have seen the waveforms. Now what new we are going to study here is how to obtain the frequency response for this single stage common source amplifier. So for the convenience I have given the proper labels. So when we go for a simulation with AC analysis, it will take these segment labels or the node labels as a reference voltages. So it becomes easy for us to understand. So go to the simulate menu bar. From that analysis option, go for the AC analysis. So in the AC analysis indicates for different values of input frequency how output parameter which is specified here is obtained. So how the input frequency is varying? Input frequency by default, whatever the values are there, I am keeping it as it is. So the AC analysis starts with starting frequency of 1 Hz and stop frequency of 10 GHz. Practically actually it is not possible to have an instrument which will give us this much variations of input frequency. It's not possible practically, but virtually with the simulation we can analyze the results. So it also asks the option, ki vertical scale, should it be linear or should it be decibel? So initially let us choose the vertical scale as a linear scale, and output parameter. Output parameter, already I have added expression, I will remove that and rewrite again. Now considering that you know ki frequency response curve is nothing but a curve which gives us the details about how voltage gain of an amplifier varies with respect to variations in the value of input signal frequency. That is what the frequency response curve. So voltage gain is nothing but output. It's a ratio of output voltage by input voltage. Let us design the equation. Output voltage. I want to add the expression first of all. So I will click to the add expression, and then in the add expression it will ask me the variables to be added.
output voltage, copy this variable, divided by divider operator, copy this dividing function to this expression, then Vout will be divided by Vin, sorry, it's a power Vin. I want the input voltage Vin. So copy this variable to the expression, make it okay. So this is the expression that is added. So when I am specifying the variables in the output parameters, so indicates for these values, this parameter, the input frequency variations will be there on x-axis, on y-axis will be getting the scale that is relevant to the voltage gain ratio, that is Vout by Vin. Now if I simulate this, so I am getting this graph. So these are the cursor details. If it is by default, you may not get it. So I will tell you how to obtain this curve. Okay, this is the initial graph what you will observe on the screen. Now I will change its background to white so that it will become easy to make the readings, make a note of readings. Now this is a vertical scale is a linear, while the x-axis scale, this is a logarithmic scale. It was given by default in the AC analysis. X-axis takes the logarithmic scale, not the linear scale, so as to cover the wider range of the frequency, which is varying from 1 Hz to 10 GHz. Now I will click over here, show trace lines and data points for all traces. So for this graph, for the second graph, if I click here and if I choose this option, so it gives me the details about all the data cursors. Now if I click on show cursor, so this is show cursor option. So it gives the cursor details. Cursor details are given in this window, and these are the two cursors, second cursor and the first cursor. Similarly, this is the phase plot and this is a magnitude plot. Magnitude of the voltage gain versus frequency, phase of the output waveforms with respect to input variation in frequency. How to obtain the bandwidth, that is a major concern now. So if you observe for this particular part, almost for wider range of the frequency range, we are getting the constant voltage gain. So what is the value of voltage gain? So now this is a cursor 1. So you observe this table, as soon as I move this cursor 1, it makes the variations in x1 and y1. So x1, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें बेसिकली जो देखना था वो ये मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ही तक ही देखना था। इसका जो फेजर ग्राफ है, मीनिंग फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट में केवल मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ही है। जैसे हम लोगों ने बीजेटी के केस में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें केवल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही ड्रॉ करना है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, sir, so जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और केवल हमें ये ग्राफ शो करना है। इस ग्राफ की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना। तो ये डायग्राम एंड जो तुमने ये फुल सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है, details we can ये सर्किट डायग्राम, तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और ये तुम्हें ऐड करने के में काम आ जाएंगे जब तुम एक्सपेरिमेंट लिख रहे होगे। ठीक है, तो वो लोग जिन्होंने प्रोग्राम बेस्ड किया है वो वहाँ पे प्रोग्राम पूरा मेंशन करेंगे, और जिन लोगों ने सिमुलेशन बेस्ड किया है वो वहाँ पे केवल सिमुलेशन का डायग्राम लगाएंगे कि हाँ ये हम लोगों ने सिमुलेशन बेस्ड किया था, तो केवल ये जो डायग्राम है ये डायग्राम यहाँ पे केवल सिमुलेशन वाला डायग्राम लगाएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि अभी नेक्स्ट जो बाकी जो तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करने हैं वो हम प्रोग्राम बेस्ड करेंगे। तो दैट इज वाई इसको हम सिमुलेशन वाला इसलिए आज चाह रहे थे थोड़ा सा डिस्कस हुआ कि तुम दोनों चीजें देख सको कि हाँ एक ये तरीका भी है किसी भी मॉसफेट या बीजेटी जो एम्पलीफायर हम डिजाइन करते हैं उसको सिमुलेट करके, मीनिंग उसके सर्किट को वर्चुअली क्रिएट करके, देन उसका इनपुट पे कितना दे रहे हैं, उससे आउटपुट क्या आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम ये इस तरह से वर्चुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो अगर हम एक्सपेरिमेंटली मीनिंग कंपोनेंट के हार्डवेयर पे करें तो कई बार चीजें नहीं प्रॉपर हो पाती हैं। ठीक है, और कॉस्ट भी इफेक्टिव नहीं होती है उसकी, इसकी वजह से हम ये सिमुलेशन करें तो बेटर है। ठीक है, इस सिमुलेशन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पी स्पाइस है, मल्टीसिम है, मेटलैब पे भी इस तरह का सिमुलेशन हो जाएगा।
तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप इस तरह का सिमुलेशन कर सकते हो। ठीक है? और इसी तरह से कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे तुम प्रोग्राम बेस्ड सिमुलेशन भी कर सकते हो। वहाँ पे तुम प्रोग्राम पे ही सारी वैल्यूज़ दे देते हो। मीनिंग यहाँ पे जैसे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पहले सर्किट को ड्रॉ किया था, देन हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन की थी। और अगर यही प्रोग्राम बेस्ड अगर हम कर रहे होते, तो हम अपने प्रोग्राम में ही ये स्पेसिफाई कर देते कि हाँ, इस R1 रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू क्या लेनी है ना? बाकी यहाँ पे सर्किट तुम्हें क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा कि ये यहाँ जो हमने मॉसफेट यूज किया उस मॉसफेट के साथ भी हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज की है। भले ही हमारे जो सिलेबस था ईडीसी का, उसमें हमारी मॉसफेट की बायसिंग नहीं थी, ठीक है, बट हमने बीजेटी बायसिंग में ये वोल्टेज डिवीजन बायसिंग हमने देखी है। ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हमने बीजेटी बायसिंग देखी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर काम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी हम मॉसफेट को वर्किंग एक्टिव मॉसफेट को बायस इसीलिए करते हैं ताकि वो एम्पलीफायर रीजन में वर्क करे। जैसे बीजेटी को हम एक्टिव रीजन में वर्क कराते थे, यहाँ मॉसफेट को हम सैचुरेशन रीजन में वर्क कराने के लिए बेसिकली ये बायसिंग करते हैं। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर बायसिंग के साथ प्रॉपर एम्पलीफिकेशन यहाँ पे हो सके। ठीक है, ये कैपेसिटर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ये दो कैपेसिटर सी इन और सी आउट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सी इन सी आउट नाम दे दिया, ये बेसिकली हमने देखा ये ब्लॉकिंग कैपेसिटेंस है ना? मीनिंग इनपुट पे एक कैपेसिटेंस देते हैं और एक आउटपुट पे कैपेसिटेंस देते हैं। इसी तरह से एक कैपेसिटेंस ये भी हमने जब हमने बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ा था, तब भी हमने एक बाईपास कैपेसिटेंस पढ़ा था। ये बेसिकली इस रेजिस्टेंस को, जब एसी एनालिसिस की बात होती है तो इस रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए हम ये कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर एसी एनालिसिस एनालॉग सर्किट में इसकी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इस कैपेसिटर का यूज क्या है। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस एक टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक बना देता है जब हम एसी एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो उस एसी एनालिसिस जब आप नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक जो हमारा सर्किट में अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वो हमारे गेन को, सर्किट का जो गेन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो वो गेन रिड्यूस ना हो उसके लिए हम यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, अब इस कैपेसिटर लगाने की वजह से हुआ क्या, ये बाईपास कैपेसिटर लगाने से कि जब तुमने डीसी एनालिसिस की तो ये कैपेसिटर ओपन सर्किट था। मीनिंग तब हम डीसी एनालिसिस में इस आरएस रेजिस्टेंस को यूज कर रहे थे। मीनिंग हम प्रॉपर इजीली अपनी बायसिंग कर पाए। और देन जब हम एसी एनालिसिस के पास आए, मीनिंग जब हमने इस जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तब ये कैपेसिटर की कुछ फाइनाइट इम्पीडेंस होगा। ठीक, ये मतलब अब ये ओपन सर्किट नहीं होगा, इसका कुछ फाइनाइट इम्पीडेंस होगा, और वो इम्पीडेंस हम कुछ इस तरह से रखते हैं कि इस रेजिस्टेंस के इम्पीडेंस से बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका इम्पीडेंस हम इवन इतना कम रखते हैं कि इसको हम शॉर्ट सर्किट तक अज्यूम कर सकते हैं। तो उस केस में इस रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव इफेक्ट होना हो सकता था, वो हम उस इफेक्ट को हम नलीफाई कर लेते हैं, उस इफेक्ट को नहीं होने देते। तो ये इसका बेसिकली कैपेसिटर का, बाईपास कैपेसिटर का यूज है। ठीक है, तो आई गेस सभी को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इन केस अगर कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो, एंड सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी स्पाइस पे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं।
सभी ने अटेंडेंस मार्क कर ली, कोई ऐसा तो नहीं जो अभी अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाया या अभी मार्क कर रहा है? ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं। यहाँ पे अवेलेबल कोई ऐसा तो नहीं जिसका वाइवा अभी छूटा हुआ है? लास्ट थर्ड फोर्थ और सॉरी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स एक्सपेरिमेंट का वाइवा कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे जिसका छूटा हुआ है? हम्म? सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी, राइट? कोई ऐसा नहीं है ना जो जिसका वाइवा छूटा हुआ है? ओके, ठीक है, फिर वीडियो एंड करते हैं।